I am Ajit. Today I am going to explain about some community topic which is important for the CHO exam. Mainly today I am focusing about the two topics. One is levels of prevention and another one is related to the vaccination. The levels of prevention. Prevention means that just we are stopping, otherwise just we are controlling spreading of the infection. So about there is some textbook you can see the primary, secondary, tertiary. Some textbook you can see pre-model, primary, secondary, tertiary prevention. Anyway, I will explain you these four things: primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. So before that topic, I will give you an idea. See, suppose just you think about one person. That person is fear about the illness. Example, just imagine करो एक पेशेंट को डायबिटिक आएगा सोच करके वो जो शुगर का दैट मीन्स जो स्वीट सब कम करके खा रहा है, बट इन इसका जो फैमिली में in this family there is no any history about the diabetes, but the person it's trying to change the lifestyle the person because of the fear. वो आदमी क्या कर रहा है, उसका जो बीमारी आएगा सोच करके पूरा प्लेस में उसका लाइफ में थोड़ा चेंजेस करके कर रहे हैं. That we can consider as a primordial. Here I will explain one. Just you can see this flow chart. Here I have mentioned no risk, no disease, prevent complication, rehabilitation, or limit the disability. See, just imagine there I have set four terms. One is primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. इधर में देखो primordial prevention मैंने जो एग्जाम्पल बोला है, जो पेशेंट जो आदमी को जो डर रहा है अगर कोई भी खाना लेने से ज़्यादा लेने से कुछ बीमारी आएगा, बट उसका जो परिवार में उसका जो फैमिली में कोई भी रिस्क फैक्टर, कोई भी बीमारी का रिस्क फैक्टर नहीं है, that we can consider as a primordial prevention. This is easy for remember, so that is the reason I have put this flow chart. So the first we can consider that is a primordial. Then if you are going for the second that is a primary, you can see the primary. In that case, in this scenario, इसमें क्या है, the person in this family history of particular problem. For example, एक आदमी को जो परिवार में उसका जो फादर और मदर किसी को हाइपरटेंशन है, अदरवाइज डायबिटीज है, उसका मतलब क्या है, वो आदमी को जो बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा है, वो जो फैमिली में जो लोग है वो लोग आने के चांसेस ज़्यादा है. दैट मीन्स देयर इज अ रिस्क फॉर डेवलपिंग द इलनेस बट देयर इज नो डिसीज. दैट मीन्स जो फादर को बीमारी है, मुझे बीमारी नहीं है, मुझे आने के लिए बीमारी आने के लिए रिस्क है बट मुझे अभी बीमारी नहीं है, वो सोच करके मेरा लाइफ में जो चेंजेस मैं कर रहे, मे बी मैं एक्सरसाइज करेगा, डाइट में थोड़ा चेंजेस लेके आएगा, दैट वी कैन कंसिडर, उसको हम लोग बोल कर सकता है प्राइमरी प्रिवेंशन. देन इफ यू आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट अनदर फ्लो चार्ट दैट इज डिसीज प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन. इसमें देखो पहले में मैंने बोला है रिस्क फैक्टर जिसमें नहीं है प्रिमोडियल, जिसमें रिस्क है बीमारी नहीं है उसको प्राइमरी बोला है. देन थर्ड आई एम जस्ट टेकिंग द पर्सन इट्स डिसीज, उसको जो बीमारी आया है और अभी उसका जो काम है वो जो ट्रीटमेंट प्रॉपरली कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करेगा फिर तो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है. अगर जब बीमारी फाइंड आउट किया है, that we can consider as a that is a secondary prevention. That is a secondary prevention. Then if you are moving for the last one, rehabilitation, that we can consider as a tertiary. Tertiary means third. इसमें देखो ऑलरेडी जो आदमी को बीमारी है
एग्जाम्पल जस्ट टू कंसिडर डायबिटीज है, उसके लिए दवाई खा रहे हैं, that is the person is taking the medicine that we can consider into the secondary prevention. See, in this person, suppose there is present with diabetic foot, उसको जो पैर में लग में diabetic foot आया है, सोचो वो, you know that when the diabetic foot is occur, that can lead to the gangrene, otherwise necrosis formation is occur. Once this necrosis is occur, then we need to go for the amputation for their recovery process. So अगर जो आदमी को उसका जो डिसेबिलिटी को कम करने के लिए, जो तकलीफ को कम करने के लिए, जो वुंड फीलिंग प्रोसेस को जल्दी ठीक करने के लिए, उसको लाइफ को बचाने के लिए क्या हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज इन द थर्ड फेज. इन द टर्शरी प्रिवेंशन मेनली वी आर जस्ट rehabilitating the patient, as well as we are just limiting the disability, otherwise limiting the impairment. जो बीमारी ज्यादा स्प्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो पेशेंट को लाइफ को बचाने के लिए हम लोग को साइड से जो कर सकता है, लिमिट, दैट मींस लिमिट द डिसेबिलिटी, वी कैन डू इट. So this word you have to remember before I am starting this levels of prevention. Now see the levels of prevention. First one is a primary prevention. Sorry, first one is a primordial. Primordial, I have said there is no any risk factor. That means the person, they can do the normal life. उसका जो फैमिली हो, परिवार, किसी को भी कोई भी बीमारी का कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई भी डिसीज का. बट द पर्सन, वो आदमी अपना से उसका लाइफ में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कंटिन्यू कर रहे हैं. सो दिस वी कैन कंसिडर इन द प्रिमोडियल प्रिवेंशन. सो हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वन पर्सन इज गिविंग द मास एजुकेशन, एक आदमी को हम लोग मास एजुकेशन दे रहे हैं, दैट वी कैन कंसिडर इन द प्रिमोडियल प्रिवेंशन. देन सेकंड, इफ यू आर गोइंग फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन, primary prevention I have said before the illness. That means the person its risk factor is present. उसका जो बीमारी present है, वो risk factor, that means उसको जो बीमारी आने के पहले, that means risk factor is present. There is no disease. So when the person know that उसको जो आने के chances ज़्यादा है, तब तो उसका खाना में changes करेगा, lifestyle में changes करेगा, exercise करेगा. Same as I have said the example, one person family history, if diabetes है, उसको जो daughter को otherwise next generation को आने के chances है, वो सोच करके वो क्या करेगा, जो diabetic diet, that means वो क्या करेगा, जो खाना में शुगर का लेवल कम करके खाएगा, otherwise जो एक्सरसाइज रेगुलरली करेगा, अदरवाइज जो पर्सन का फैमिली में हाइपरटेंशन है उसको भी आने के चांसेस ज्यादा है, तब तो वो क्या करेगा, उसको डाइट में चेंजेस करेगा. दैट कंडीशन, दैट मींस दैट प्रिवेंशन वी कैन कंसीडर एज प्राइमरी प्रिवेंशन. देन इन द प्राइमरी प्रिवेंशन, दैट मींस वी आर जस्ट प्रिवेंटिंग द occurrence ऑफ द डिसीजेस. जो एक बीमारी आने का पहले, वो आने के पहले जो करने वाला चीज है, प्रिवेंटिंग द occurrence of the diseases. Then if you're taking the secondary prevention, see here the person is diagnosed. वो पर्सन का आदमी की जो बीमारी क्या है, डायग्नोसिस हो गया. दैट मीन्स हियर डायग्नोसिस हम लोग कैसा कर सकता है, स्क्रीनिंग. अदरवाइज वी कैन कंसिडर देयर इज दैट मीन्स वी आर टेकिंग सम एक्शन टेकन टाइम ऑफ डिसीज. फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन इज गोइंग टू द हॉस्पिटल विद एनी इलनेस. एक आदमी हॉस्पिटल जा रहा है कोई भी बीमारी का कारण से, कैसा हम लोग को पता चलेगा, हम लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, इधर ब्लड टेस्ट, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगा. सो दैट इन्वेस्टिगेशन, दैट मीन्स अर्ली डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन. हम लोग क्यों ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या बीमारी है, उसको बीमारी को कैसा कम कर सकता है, उसको कॉम्प्लिकेशन से कैसा बचा सकता है. सो दैट इज आवर मेन स्ट्रैटेजी. हियर वी आर फाइंडिंग द केस, जो केस को हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं. Then after find outing the case, we are giving the treatment to prevent the complication. जो complication कम करना है, वो आदमी ठीक होना है, सोच करके जो prevention के लिए कर रहा है, that is we can consider as a secondary prevention. Then if you're taking the secondary prevention, we can consider some
in our national health program. For example, you can take the tuberculosis, otherwise blindness problem, national blindness program. So in this case, we are just evaluating, we are just find outing what are the person, which personas are the diseases. अगर किसको किसको ये बीमारी है, उसको हम लोग क्या देता है, डॉट्स थेरेपी देता है. That means that is in the secondary prevention. So maximum to national health programs that is come under the secondary prevention. Then next, if you are moving for the tertiary prevention, that I have said earlier, mainly the tertiary prevention to reduce the impairment or the disability, because here the person, it's a disease is present, but we have to save the patient life. So after the either the surgery or after the illness, we are rehabilitating, we are making the person to reduce their disability. That is the things we are mainly doing in the tertiary prevention. So have you clear with this? That means primordial, there is no risk. Then primary, there is a risk but no disease. Secondary, there is a disease, early detection, prevent complication. Tertiary, reduce the impairment, rehabilitation. So that means the for save the person life. So this is about the levels of prevention. You can expect 1 or 2 questions from this topic. Then next is related to the vaccination. So vaccination, you know that. So vaccination, we can divide it into 3. So first, anyway, we will discuss with one by one. First, vaccine, we can divide in live vaccine, killed vaccine, or toxicoid vaccine. So first, in the live vaccine, first I will explain the live vaccine. Live vaccine means we are just live form of medication, live form of vaccine we are injecting to the person body. See, this live, always you remember live vaccine, which is contraindicated for the pregnancy and immunocompromised patient. जो आदमी लोग प्रेग्नेंट है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज है, वो लोग को ये लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. देन और एक चीज है ड्यूरेशन. अगर एक आदमी एक लाइव वैक्सीन आज लिया है, then next vaccine वो ले सकता है after 3 months. That means after 3 weeks, not 3 months, 3 weeks. Minimum there is a duration between 2 live vaccine, 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks minimum duration होना चाहिए. So live vaccine, say I will tell you on short form that is easy, you people can remember the live vaccine, because regularly the CHO you can expect the related to the which is live vaccine, which is killed vaccine. So in the live vaccine, say you can remember, you can study this short form, my Rome trip. ये short form सब लोग याद करके रखो. So this is a easy method. We can remember what are the live vaccine, what are the kill vaccine. So this is a tips we can use only for the live vaccine. M, what is this M represent? So O, which is represent R, O, M, E, T, R, I, P. So M, first we can go M, that is in the measles. Then otherwise we can consider mumps. M for the mumps. Then O for yellow fever. R for rubella. O for oral polio vaccine. See, in the polio vaccine, oral भी है, IV भी है. So oral polio vaccine, that is a live vaccine. The other name we can consider the oral polio vaccine is Sabin. Sabin, it is other name of oral polio vaccine. Then M, another M for measles. E for epidemic typhus. Then T for TB vaccine. TB vaccine means there is a BCG. TB vaccine means BCG. Then another one more T, just you remember, typhoid, same as OPV, we have the typhoid that is in the oral form as well as injectable form. So in the oral form of typhoid vaccine also we can consider as a live vaccine. Then R for rubella. Then I for influenza. Then P for plague.
Plaque you can identify in the both side, killed vaccine as well as in the live vaccine we can identify the plaque. So just to remember my ROM trips, M for mumps, L for yellow fever, R for rubella, O for oral polio vaccine, M for measles, E for epidemic typhus, T for TB vaccine, that is BCG, as well as we can consider the oral typhoid vaccine. R for rubella, I for influenza, P for plaque. Once if you thorough with live vaccine, अगर एक बार तुम लोग live vaccine thorough हो गया, तब तो अगर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आ रहे किल्ड वैक्सीन, यू कैन फिल्टर इजीली, इसको क्या कर सकता है, फिल्टर कर सकता है. सो फर्स्ट यू स्टडी प्रॉपर्ली अबाउट द लाइव वैक्सीन, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ माय रोम ट्रिप. इफ यू हैव एनी अदर न्यूमैनिक्स, अगर और दूसरा कुछ टिप्स तुम लोग हाथ में होने से वो भी ठीक है, उससे भी पढ़ कर सकता है. Then if you're taking the killed vaccine, otherwise inactivated vaccine, the example we can consider as typhoid, that is injectable form of typhoid vaccine. Then injected polio vaccine. Injected polio vaccine, that is IPV, you can consider as a Salk. इसका नाम Salk है. Oral को मैंने बोला है Sabin. Here I have said about the Salk. Then cholera, pertussis, rabies, hepatitis B, Japanese encephalitis. So these are the example for the killed vaccine. Once if you thorough about the live vaccine, my ROM trip अगर तुम clear हो गया, automatically you can filter, तुम लोग को filter कर सकता है इसमें कौन सा है live vaccine, कौन सा है killed vaccine. So once if you are filtering that, तब तो क्या होगा, easily we can get the 1 mark. Then next, see another thing, when you are going for the this oral vaccines, all the oral vaccines like OPV and typhoid, oral typhoid vaccine, so that we can consider as a live vaccine. Then same as I have said previously, मैं पहले एक बार बोल के चुका है, हम लोग का duration between the live vaccine. Then duration मैंने बोला है minimum 3 to 4 weeks duration between 2 live vaccine. Then contraindicated बोला है pregnancy, immunocompromise दोनों को नहीं देना है. Then toxoid vaccine. Toxoid vaccine it is easy to remember, DPT, that is diphtheria, pertussis, tetanus. Otherwise, suppose if the combination DTRA, diphtheria, tetanus, TT, tetanus, the toxoid, otherwise TDRA, tetanus, diphtheria. So you can remember the toxoid vaccine, that is same as in the combination of DPT, that means diphtheria, percutans, tetanus, if it is coming, that we can consider as a toxoid vaccine. So you can expect 1 or 2 questions from this particular topic, mainly either levels of prevention. Regularly they are asking the question from the levels of prevention as well as from the vaccination. In the vaccine, at the same time, you have to properly study about the communicable diseases, intubation period. Then what is the route of giving these medicines? Agar measles, कौन सा route से देगा? Then hepatitis B, कौन सा route से देगा? Then rotavirus. Most of the time, repeatedly they are asking the question about the rotavirus. Rotavirus कौन सा route में देगा? Oral. Then OPV में OPV का नाम क्या है? That is a Sabin. So like that they are asking the question. So you have to prepare well and you can write the exam. When you are studying properly, you can easily filter the answer because they will give you the 4 option. In the 4 option, if you're checking means जो 4 option में उसमें 2 option क्या है, एकदम filter कर सकता है. फिर भी 2 ऑप्शन होगा, वो है मुश्किल है, उसको हम लोग फिल्टर करके राइट प्लेस में जाना है. वो है इजी मेथड टू फाइंड आउट द आंसर. अगर 4 ऑप्शन है, फिल्टर करो कौन सा गलत आंसर, उसको पहले फिल्टर करो. उसके बाद में जो फाइनली कौन सा आंसर तुमको ठीक लगता है उसको क्या करना है, बबल करना है, अदरवाइज उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है. सो दैट इज अ वे यू कैन गेट द गुड रिजल्ट. ओके, देन आई एम वाइंड अपिंग द टुडे सेक्शन. Next week again I will put the another video for the CHO people. Okay, thank you.